Good morning, students. Today in this video, I am going to teach you the poem The Last Bargain, which was composed by Rabindranath Tagore. Here in this poem, the poet is telling about the worthlessness of the worldly power and beauty. Here in this poem, a man was looking for a job and he was willingly to serve anybody on payment. इस पोएम में एक मैन है जो कि तलाश कर रहा है जॉब की और वह किसी के यहाँ पे भी काम करने के लिए तैयार है बट ऑन पेमेंट एंड ही वाज वेटिंग टू बी हायर्ड और वो ये कहता है कि कोई उसे हायर करे, कोई उसे अपने काम पर रखे. ही वॉक अलॉन्ग द स्टोनी रोड फॉर एन एम्प्लॉयर एंड द किंग कैरिड अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, कैम इन हिज ओपन रॉयल व्हीकल. और एक सडनली वहाँ पे किंग आता है और अपनी रॉयल व्हीकल में एंड ही कॉट द मैन बाय द आर्म एंड सेड दैट ही वॉज रेडी टू हायर हिम विद हिज पावर. और वह तैयार हो जाता है कि वो उसे हायर करता है, किंग हायर करता है उस मैन को विद हिज पावर, अपनी पावर से. बट द मैन मैन रिजेक्टेड दैट ऑफर. वो उस मैन को उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है एज पावर हैड नो अट्रैक्शन फॉर द मैन, क्योंकि वो उसकी पावर से कोई अट्रैक्ट नहीं होता है. एंड द किंग वेंट अवे. और थोड़ा और आगे जाता है. एट द मिड वे इट वॉज सो हॉट एंड द हाउसेज हैड देयर डोर शट. सब लोगों के घर बंद होते हैं. द मैन वॉज गोइंग अलॉन्ग द इरेगुलर लेन एंड ऑल मैन हियरिंग हिज ऑफर कैम टू हायर हिम विद हिज गोल्ड कॉइन. तभी वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि वो उसे हायर कर लेगा और साथ में उसे गोल्ड कॉइन्स देगा. एंड ही काउंटेड द कॉइन्स वन बाय वन बट द गोल्ड डिडंट अट्रैक्ट द मैन. लेकिन गोल्ड ने भी उस मैन को अट्रैक्ट नहीं किया. सो ही ऑल्सो रिजेक्टेड दैट ऑफर. एंड देन द इवनिंग टाइम हैज़ कम एंड there is a sight the poet has seen, that the garden which was laden with the flowers and a lovely maid came out and offered him to hire. तभी वहाँ एक lovely maid आती है, एक गर्ल आती है who came there to hire, कि वो उसे हायर करेगी. एंड ऑफर टू हायर विद अ स्माइल. और वो सिर्फ उसे एक स्माइल देगी. एंड बट शी टू वेंट अवे. लेकिन वो भी चली जाती है. एंड हर स्माइल टर्न इन टू टीयर्स. और उसकी स्माइल टर्न बदल जाती है टीयर्स में. एंड शी वॉज लॉस्ट इन द डार्कनेस. एट लास्ट अ चाइल्ड प्लेइंग विद शेल्स एंड सेड दैट ही वुड हायर हिम विद नथिंग एंड द पोएट एक्सेप्टेड हिज एग्रीमेंट. लास्ट में अब एक बच्चा होता है जो कि शेल से खेल रहा है एंड वो उसे बोलता है कि वो उसे हायर कर लेगा लेकिन बिना कुछ किसी चीज़ के. सो पोएट एक्सेप्टेड हिज एग्रीमेंट और पोएट उसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता है. बट स्पीकर वॉज अट्रैक्टेड और स्पीकर अट्रैक्ट हो जाता है बाय द फ्लोलेस कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है और उसका कैरेक्टर बहुत अट्रैक्टिव होता है. सो ही एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द बार्गेन ऑफ द चाइल्ड मेक्स द स्पीकर अ फ्री मैन. और उस बार्गेन ने जो लास्ट वाला बार्गेन किया बच्चे के साथ, उस बार्गेन से वह बहुत फ्री मैन फील कर रहा है. ही वॉज फीलिंग जस्ट लाइक अ फ्री स्पिरिट. दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजास with different numbers of lines. Now we will discuss the poem line by line in order to understand the hidden meaning of the poem. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand, said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Here in the first stanza, the poet says that it is the time of the morning and he was walking on the stone paved road. Stone paved road means a difficult path. And sword in hand, and the king came in his chariot. And king came in his chariot mean and sword in hand. It shows that means a powerful person, a person with a power. So when he was walking on the stone paved road in the morning, the king came in his chariot with a sword in his hand. जब वो एक रोड पर चल रहा होता है, स्टोनी पाथ पर चल रहा होता है, तभी वहाँ पर एक किंग आता है अपने रॉयल कार्ट में. Seeing him, the poet requested the king to hire me. तो किंग से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अपने हायर कर लो, मुझे अपने काम पर रख लो.
So here it is a time of the morning and morning symbolizes hope and courage, और morning symbol होती है hope और courage का. And even the poet seems to be hopeful, और इसी वजह से यहाँ पे poet hopeful है कि उसे कुछ काम मिल जाएगा. And the speaker requested the king, which means that he is in a need of something, और उसे कुछ ज़रूरत है. एंड ही आस्क्ड द किंग टू हायर हिम, और वो आप पूछता है किंग से कि उसे हायर कर लो. हायर मीन्स द पॉइंट वांट्स टू गेट द व्हाट द किंग हैज़, जो किंग के पास है. सो ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड I will hire you with my power, but his power counted for naught, and he went away in his chariot. The king holds the hand of the speaker and says that he will hire me with his power. वो मुझे हायर कर लेगा लेकिन अपनी पावर से. However, the power which seems to be nothing, it is a worthless. Why power is worthless? Power worthless क्यों है? क्योंकि it will not everlasting, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगी. It will die, it will finish. The king will die, and so his power will also die with him. So here in this stanza, the speaker is not thus satisfied with what the king offered him. He rejects the offer, and king goes away in his royal cart. Chariot means royal cart. And the speaker here describes how he struggles to get something, and he got fail. Now it is the time of the day, and it is a very hot outside. The doors of the houses are closed, and the speaker is wandering along the crookland. Crookland means which is not straight. Crookland means which is not straight, band or uneven roads. An old man came out with a bag of gold, and an old man comes out of his house along with a bag of gold. He pondered and said, pondered means he thought about that. उसे सोचा carefully. I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. And he thought carefully, and finding that the speaker is in need of something, और उसे लगता है ओल्ड मैन को कि स्पीकर को ज़रूरत है जॉब की. सो ही ऑफर्स हिम मनी, वो ऑफर करता है. एंड सेज दैट द ओल्ड मैन विल हायर हिम विद दैट, और वो उस गोल्ड कॉइन से उसे हायर कर लेगा. बट द ओल्ड मैन, इन ऑर्डर टू शो हाउ वेल्दी, ही स्टार्ट काउंटिंग हिज गोल्ड कॉइन्स वन बाय वन, और वो काउंट करता है उस गोल्ड कॉइन्स को एक के बाद एक. हाउएवर लाइक द पावर ऑफ किंग, जिस तरीके से किंग की पावर से पॉइंट अट्रैक्ट नहीं हुआ, द वेल्थ ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड the wealth of old seems to be worthless for the poet. तो वैसे ही उसे ये गोल्ड जो कॉइन्स थे उनसे भी पॉइंट अट्रैक्ट नहीं हुआ. बिकॉज इट कुड नॉट मेक द ओल्ड मैन यंग अगेन, क्योंकि ओल्ड मैन इससे तो यंग नहीं हो सकता. एंड इट कुड नॉट मेक द क्लाइमेट कूल, और ना ही क्लाइमेट कूल हो सकता. सो हियर अगेंस्ट द स्पीकर समझाता है डैट वेल्थ इज़ नॉट समथिंग विच ही नीड्स, उसे वेल्थ की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज लाइक द पावर, लाइक जैसे पावर है, इट डजंट रिमेन इन वन हैंड, वो हमेशा एक पर्सन के पास नहीं रहती. इट विल चेंज, एंड ही वांट समथिंग एल्स एंड दस गोज अवे, और उसने उस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया. टर्न अवे मीन रिजेक्टेड द ऑफर. सो ही वांट समथिंग एल्स एंड दस goes away from that place. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. So now it is the time of evening time. It was evening time. And the garden hedge means boundary, fences of garden, is a flower. Mean the boundary of the garden is blooming with the flowers. In other words, the garden is looking very beautiful. And the fair maid came out, and a beautiful lady comes out and said, I will hire you with a smile. That she will hire me. She wants to hire me with a smile, with her beauty. So, however, the speaker finds that like the king's power, the old man's wealth, जिस तरीके से king की power और old man की wealth similarly is not everlasting, वो everlasting नहीं थी. In the similar manner, the beauty is also not everlasting, और beauty भी time के साथ finish हो जाएगी. It will be perish with the time.
So soon the smile of that beautiful lady is pale and melted into tears, and it has gone, and she goes back along in the dark, and she went back alone into the darkness. Dark here symbolizes mean hopelessness, and the speaker don't want hopelessness. Again the lady will go into the dark. So he understand that a smile that made her look beautiful, जिस स्माइल से वो लेडी ब्यूटीफुल है, इज अ फेक, वो फेक है, एंड नॉट एवरलास्टिंग, वो हमेशा नहीं रहेगी. इट हैज़ अ हिडन सोरोज of the lady. And now the day is over, but the speaker still fails to make a bargain. लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई बार्गेन नहीं किया है, but he has a patience and persistent, and he didn't give up, and he will move ahead and do bargain in future. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with the shells. He raised his hat, seemed to know me, said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in his child's play made me a free man. So now in the final stanza, the new days come with a new hope and courage for the speaker. Now he is at the seashore. अब now poet seashore पर है, and sees the sun is glistening. Glistened mean shining, and the sun is shining on the sand. And the sea waves broke waywardly, and the sea waves breaking, striking waywardly. Waywardly mean unpredictable, without any play, without any style. They are moving, the sea waves are moving. The vista presented by the speaker, it symbolizes that love and appreciation of nature. The poet is describing the sun and the sea, and it symbolizes that how he appreciate the nature, कि वो nature को किस तरीके से कितना appreciate करते हैं. So he raised his hat and seemed to know me and said, I hire you with nothing. So a child sat playing with shell. Or now the poet finds a child sitting on the seashore. और poet देखता है कि child है जो seashore पर बैठा हुआ है, and he was playing with the shells, और वो shells से खेल रहा है. And this child, this image is a symbolic image, as the child has no desire for power or wealth or beauty. So he is free of all these things. वो सारी चीज़ों से free है, which make the man a servant. And now he raises his hat. Now the child raises his hat and sees the speaker, और speaker को देखता है, seemed to know me and said, I hire you with nothing. So the speaker, it looks to the speaker, and child knows him, seeing the speaker in quest, that the speaker is in search for something, कि speaker कुछ search करने आया है. The child offers to hire him, और child उसे offer करता है कि वो hire करेगा with nothing. So I hire you with nothing, कि मैं आपको hire करूँगा लेकिन किसी कुछ भी नहीं दूँगा. Nothing is a profound symbol. Here symbol, nothing is a symbol of freedom. It is a symbol of liberty. It is a symbol of independence and free from desires. So from henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. So the speaker understand that this is what he was longing for since long, और उसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी. He accepted the child's offer, and henceforward, from that day, henceforward mean here from that day, after that, उसके बाद, that bargain struck in child's play made me a free man. And the speaker finds freedom in the child's play, और speaker को child play में उसे freedom नज़र आई, and thus free become a free man, और वो एक free man बन चुका था. And this is was the ultimate destination of the poet, और यही एक final destination था poet के लिए.